My life has been an utter failure. I was the first Asian to bring home the Nobel Prize in the scientific field. I thought I would build true science in our country. All we have now is a legion of camp followers of the West. There can be no salvation, no real advance at this rate. He was one of India's greatest physicists, the acknowledged leader of the early scientific movement in this country. Nobel laureate, he is renowned for a discovery that bears his name, the Raman Effect. Why then, in the twilight of his life, does he look back not with pride and satisfaction, but with pain? He was a man of strong convictions and innovative ideas, many of which are as relevant to Indian science today as they were at the turn of the century. This film is not just about the life of a famous man now no longer with us, but also a tribute to his genius. This is a film on the legacy of Sir C.V. Raman. The young Raman was curious by nature. He wanted to know more about everything that he saw and heard. For the rest of his life, this curiosity, combined with an inherent love for nature, drove him to study her many facets. Even at the age of 82, he was exploring new vistas as actively as he did as a child. For him, science had always been the key to understanding the workings of the world around him. Fascinated, he mastered such classics as Ganot's physics. There is a story that late one night, despite high fever, he refused to sleep till his father, a science lecturer, fetched a Leyden jar from his college and showed him how it worked. See, a large amount of charge is accumulated at the bottom. You connect this to the electrode, it gets discharged. Apadiya, there's a spark. Raman was born near Tiruchirappalli in Tamil Nadu in 1888. From there the family moved to the coastal town of Visakhapatnam when he was 4 years old. The sun, the sea, nature in all its primordial beauty here must have first stirred the young boy. He began to ask questions. His father encouraged his curiosity. As Raman's thirst for knowledge grew, he was spurred to take science up seriously in later years. When light falls normally on a rectangular aperture, one gets a series of dark and bright bands symmetrically arranged around the slit's image. What if I hold the aperture inclined to the incident light? The diffraction bands are sensibly symmetrical when the incidence is moderate and asymmetrical when it approaches 90 degrees. The minima in this case are of course given by the usual equation. A cos theta minus cos phi is equal to plus minus n lambda. What are you doing now, young man? Sir, I'm trying to work out a new method of measuring the surface tension of liquids. New method? Why? Because by the usual method, either the drop is not steady or it falls down in the middle of the observation. So I thought if I could photograph the drop profile, it would be easier to calculate the surface tension. Sounds ingenious. Carry on. Oh, sir, Professor Jones, sir. One moment, please. Yes? Some time ago, I'd given you a paper of mine for comments. A paper? Yes,
on unsymmetrical diffraction bands when the incident light is oblique. Really? Ah, yes. Perhaps you did. Well, it is nothing much to go by. Nothing at all. Carry on with your work. Raman was not discouraged by Professor Jones's lack of interest. Instead, he took the initiative and sent his paper to one of the most respected scientific journals, the Philosophical Magazine in London. And it is to his credit that he had enough confidence in his first independent experiment to be able to send his findings to such a reputed magazine. For then, as now, education was a means towards a degree. Students were not encouraged to think independently or to use their initiative. Colleges in India did not have a tradition of research. Which of course brings us to a very fundamental question. What is research? It is only seeking after knowledge. Knowledge is not dead and enshrined in books, but living, growing. It is the attempt to discover new facts and new relationships between known facts. A university is not a university if this is not understood. You must be one of the seekers, else you'll be left behind. Raman's scientific makeup is very fascinating. He was the product of an educational system that did not attach much importance either to science or to curiosity, which of course is very important if one wants to be a scientist. Spurred largely by books, he absorbed by himself all the important points about science, after Newton that is. And if one might borrow a phrase from Newton, one could say that Raman stood on the shoulders of giants like Newton himself, Faraday, Ampere, Maxwell, Lord Kelvin, and of course Lord Rayleigh, who inspired him quite a lot. Way back in 1907, a handful of Indians were still struggling to create a niche for themselves in areas dominated by the British. There was no scope for a scientific career, as there is now in post-independent India. So Raman decided to do the next best thing, join the government. Topping the entrance examination to the Financial Civil Service, he was appointed Assistant Accountant General, the youngest ever to be so appointed. This was a period of great change in his life, for he also happened to meet his future bride, Lokasundari. The couple were married, and on Raman's posting, moved to the bustling capital of the Raj, Calcutta. But Raman had not lost his interest in research. And one day, at 210 Beaubazar Street, he stumbled upon the Indian Association for the Cultivation I would like of to meet Science. the person in charge. Asun, come in. What did you say your name was? I will write it down. C. Venkatraman. I'm a government servant. The Assistant Accountant General, in fact. But I'm interested in continuing to do my research in my spare time. Original investigation in optics and acoustics. Well, come with me. You see, we do have a laboratory, but it's so decrepit. You know why? Because in the 30 years since it was built, no one ever came to me and said he wanted to do research. The epitome of science in our country. This place was built with many hopes by my uncle, Mahendralal Sirkar, a staunch nationalist. He believed that science can change people's way of thinking. He started lectures,
They became very popular, but no one was interested in anything beyond that. I would like to do my research here. You would? But only after office hours. I can't let the timings clash. Of course. Ashu Babu will be here to help you. But you will want something. An honorarium? Our funds are low. And I'm afraid I can't afford to pay you very much. You needn't worry. This is all that I need. I'll start tomorrow evening. Thank you, Mr. Raman. Thank you. All these years we have been waiting for someone like you. Raman started his work in acoustics with the study of violin strings. He continued the work of Helmholtz and established the whole theory on a firm footing. Afterwards, he also investigated how the quality of the tone of the violin string is determined by the bowing pressure, bowing speed, and the point at which he bows. He continued the work further into other Indian musical instruments. The most notable piece of work he did was on the study of the vibrations of the Indian drums. The mridangam and tabla are rather unique instruments in that they are the only two drums in the entire world which can produce a group of harmonic overtones. Raman discovered that these drums give harmonic overtones by the particular loading to which his drums are subjected. For example, the fundamental mode of vibration comes when the drumhead vibrates as a whole, and the second harmonic comes when the drumhead vibrates in two halves, the central line remaining at rest all the time. And the third harmonic comes from this mode of vibration with one nodal circle or two nodal diameters like this one. These two modes can combine to produce a variety of modes of vibration. You see what I mean? Such wonderful tones. Of all the musical instruments, the veena comes closest to resembling the human voice. Really? I've been seriously playing the veena for so many years, and I never realized it. The strange fact is, there is a law in Western science which states that certain overtones just cannot be produced by any musical instruments. But the veena violates it. You know why? All because of this curved bridge, whereas Western instruments have flat bridges. How much our ancients knew about acoustics. Do you know something? What? The Germans have asked me for an article. Uh-huh. That's good. Yes. It's just not enough to do research anymore. You must publish the results immediately. So emanated the first research papers from the IACS, 30 years after it had come into existence. During those early years, Raman worked for the most part alone. Even so, the publications poured out. In fact, so fired was Ashu Babu by Raman's enthusiasm that even he wrote a paper for the Proceedings of the Royal Society. And Ashu Babu had never even been to college. Raman's fame began to spread. Not only did he become a source of inspiration to young research scholars like Venkateshwaran, Ganeshan, and of course, K.S. Krishnan, but Sir Ashutosh Mukherjee, the Vice-Chancellor of Calcutta University, offered him the Pallet Chair of Physics at the University College of Science. He accepted this post gladly, even though it meant receiving only half the salary that he earned as the Assistant Accountant General.
this green filter, it's complementary to the violet, so it cuts off all the violet color passing through. Mm-hmm. But when I place it here, in the path of the scattered light, the result is not the same. There's a track of light visible. A track of light, in spite of a complementary filter. Why? I don't know. I suppose it's a weak fluorescence due to impurities still inside the liquid. I'll have to purify it even further. What do you think, Krishnan? I don't know. I've investigated more than about 60 liquids. Among them, not only water, but some alcohols too show the fluorescence quite markedly. But what puzzles me is, whereas fluorescence is generally unpolarized, the scattered light here is polarized. I'm beginning to wonder, is it fluorescence at all? Because if it's not fluorescence, then it should be scattering. Because Rayleigh scattering can be polarized, and it would be strong. Whereas the track that we have over here is so very feeble. Could it mean, is it not possible that it's not fluorescence at all, but altogether something new, something different? Not fluorescence, not Rayleigh scattering. Sir, I've just studied the visible radiation excited by ultraviolet light in pure dry glycerin. It's strongly polarized. What? And the track is a brilliant green instead of the usual blue. Green. A change in wavelength and polarized. This definitely cannot be fluorescence. This is something new. Boys, remember, I'd always said there must be an optical analog to the Compton effect. Is this it? You mean, when X-rays are scattered by atoms, there's a change in frequency? Exactly. Just imagine, if there's a change in wavelength with the scattering of X-rays, I think the same effect can take place with the scattering of visible light. But how do we prove it? The track that we have is too feeble. We should try and make it stronger. Probably we'll have to use a larger lens and complementary filters. Krishnan, I think you should follow it up. Aye, sir? Yes. I think I need somebody who can use the sunlight throughout the day. I've got my classes and Venkateshwaran's busy working, so he can only come in part-time. Besides, you've stayed away from experimental work for too long. Not at all healthy for a scientist, huh? This is marvelous news. Just wonderful. You understand what I mean? The first step taken in the research was to find whether the effect is shown by all liquids. The method of investigation was to use a powerful beam of sunlight from a heliostat concentrated by a 7-inch telescope objective combined with a short focus lens. This was passed through a blue-violet filter and then through the liquid under examination contained in an evacuated bulb and purified by repeated distillation in vacuum. It's true of visible light, sir. It's true of visible light. There's still a track in spite of the complementary filter, sir. It's polarized. And there's a change in wavelength. But the links are still missing. How do I show that there is a change in energy or a change in frequency? Frequency, color. The spectrum, of course. The spectral lines will indicate any change in frequency. Ashu Babu, arrange for the spectroscope. Quickly, quickly! Where's Krishnan? Not come today, sir. Religious ceremony in his house. It's ready, Sahab, but the sun is setting. The light will not be strong enough. Oh, dash it all. First thing tomorrow morning, huh?
Next morning I could see the spectral lines, but they were not clear. It occurred to me to change the light source, to use a monochromatic light. Ashababu, get me the mercury arc lamp. It's so clear, Krishnan, so very clear. In the blue-green region, there are 2 sharp lines instead of 1. What? Yes. Between the incident line and the new line, there's a distinct dark space. The new line must be of a different frequency. It shows a change of energy. The new line that Raman discovered indicates the amount of energy lost or gained by a photon of light when it interacts with an atom of matter. This in turn tells us a great deal about the atomic and molecular structure of that substance. It was a momentous discovery that paved the way for new research in almost all branches of science. C.V. Raman was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930. It was a moment of great significance, for not only was it a tribute to the man, it also officially put a country struggling for an identity on the scientific map of the world. The Raman effect provided the last convincing proof regarding the photon concept. The photon concept was proposed by Albert Einstein as early as 1905, but it found little acceptance for nearly 2 decades. And the Raman effect was one of the discoveries which made it very clear that the photon concept was correct. And it's not surprising, therefore, that Einstein hailed this discovery. It must be realized that Raman did his work with a very feeble, energy-wise broad source of light. This required long hours of experimentation to collect a single spectrum. With the discovery of the laser, which is an intense, energy-wise, narrow source of light, Raman spectroscopy received a big impetus. Now we could collect a spectrum in a few minutes and with higher accuracy. Today, it is being used to solve important problems, not only in one branch of science like physics, but in many, many branches of science, almost all branches of science, chemistry, biology, material science, earth sciences, and so on. Even on application sides, it is always a part of analytical technique which is used for high technology. For example, in microelectronics, space, nuclear fusion, optoelectronics, you name it. The man was once the center of scientific activity in India. He is now a recluse, perhaps because success inevitably breeds envy. When Raman was appointed to the Palit chair, the impression began to be created that he was a has-been physicist working on highly dated problems while a new wave of physics was sweeping the rest of the scientific world. Raman's own nature did not help. His ego had alienated many people. In the years following the Nobel Prize, the resentment against him grew more vocal. It was said that Raman did not understand the significance of his own discovery, that it wasn't even his, that it was Krishnan's. It depends upon the point of view that we take. For example, if we ask ourselves, who was the first person who observed the Raman effect? There is no doubt that the first visual observation through a direct vision spectroscope was made by Raman himself. The question is, who took the first recorded Raman spectrum? It was K.S. Krishnan. Raman got the idea that sunlight must be replaced by a mercury arc, and Ashubabu, Raman's famous assistant, and K.S. Krishnan had just the spectrograph, and K.S. Krishnan developed the film. And so we could say he recorded the first spectrum.
But that is not the real point. One should always ask, who got the idea? Who was behind this thing? In 1933, Raman came to Bangalore. He'd been offered the directorship of the Indian Institute of Science. The institute had never had an Indian director. They had always been British. The institute had also never had a physics department. Raman set about creating one. Your work has been promising. You should keep it up. You put in a little more effort, and you can go much further. Thank you, sir. You know, this institute needs young blood like yours. It needs to be changed, reformed. People in these parts have a joke about the institute. They call it a sanatorium with a few laboratories attached. But, sir, I think you have changed all that. Naturally. Why should the workshop only carry out repairs? That's gross underutilization. They should be able to fabricate new equipment required by the various departments. And within the departments also. The physical chemistry department should be part of the physics department. The chemists over there will have a much better chance of interacting with colleagues who have similar interests. Oh, there's so much that can be done. You know something? Max Born is coming. Sir, have you heard from him? Yes. I've received his letter this morning. He's accepted the readership I offered him. Just wait and see, my friend. Things will begin to change for India. No more will our youth have to go abroad to get initiated into research. But as it is, I don't like the practice. The environment over there is so very different, and the conditions here makes them useless here. You know what I feel? If great men like Max Born and Schrödinger were leaving Nazi Germany, they can be provided with a home here, then perhaps there can be started off a real scientific movement in the country. The renowned physicist Max Born did come to India, and soon Raman strove to make his position permanent. But all Raman's reforms were too sudden. They ultimately led to a major controversy. The problem between C.V. Raman and the council leading to Raman's resignation has many facets. I shall briefly mention 4 of them. First, Raman was the first Indian director to be appointed. 3 Britishers had preceded him, and the British faculty members were rather reluctant to work under an Indian director, as evidenced by Max Born's letter to Rutherford. Second, Raman had some attitudinal problems. He was an extrovert with a sharp tongue and oftentimes overbearing. He lacked administrative tact, which is so essential for a director. The third aspect, there was no physics department before Raman came. He created it and he equipped it. There were tensions and charges that Raman was building the physics department at the cost of the other departments. The Irwin Committee was not all that objective. Its members were prejudiced against Raman, and Raman ultimately tendered his resignation from the post of directorship and continued to work as the head of the Department of Physics. Having no alternative, Raman decided to stay on. He continued to do research of a high quality in optics, crystal physics, and ultrasonics, in which the Raman-Nath theory is an outstanding piece of work. But the controversy had left its scars. The problems that Raman faced in his attempts to upgrade the Institute were to him representative of larger issues at stake. These included the need to recognize the importance of fundamental science
to manufacture equipment indigenously, and to make universities centers of research. Many Indians before Raman had shared these views, some of which are relevant to us even today. Professor wanted India to be great, a great country doing great science. You must remember that when he did most of his work, we were under the British, and when he got the Nobel Prize, the flag that he sat under was the Union Jack. So he felt very strongly that India should be independent, and independent not only economically and politically but scientifically. Now in the post-independence era, we have certainly had more money for science and more opportunities, but somehow our values have got severely eroded, and this is beginning to cost us, although we are hardly conscious of it. Take for example a thing like the recent excitement concerning high temperature superconductors. Like all other countries, we have also spent a lot of money on research, which of course is good. But the sad thing is that we have spent a lot of this money for buying equipment from abroad. I mean equipment to measure electrical resistivity. In 1911, Camerlingons discovered superconductivity using his own home-built equipment. And today, roughly 80 years later, we are importing such equipment to make the same kind of measurements. And this is exactly the sort of thing that Raman was warning us in those days. 2 years before my retirement from the Indian Institute of Science, I started building my own center. I called it the Raman Research Institute. There was no water, no electricity when I first started. But that didn't make a difference. At least I could do my highly personal research work without any interference. You know what I mean? Like the poet and the painter, the scientist too is motivated by an inner creative urge. Only earlier, I felt I had to prove my findings to others. Today, if I have seen and understood, I am satisfied. I don't think Raman really discovered anything or added anything to our understanding of vision. There are three major tenets of the theory of vision or modern theory of vision, with each one of which Raman seemed to have taken issue and disagreed. He totally ignores what the contemporary knowledge of physiology of vision was. It's what goes on in brain which constitutes perception, and you have to pay attention to that. And yet in his book he pays no attention to that. He talks all the time of what happens in the light, in the way light acts on the retina. But he pays no attention, and by then actually a fair amount had begun to be known about how information reaching the eye is analyzed by the brain. And really key to understanding the perception of color is in understanding that, and how brain analyzes the signals which go from the eye. So that sort of is, one has, it only can evoke in one sense a feeling of sadness that a mind like that essentially had decided to cut himself off from what the science was. When he made his discovery, he was already 40 years old, and thereafter he was not able to hold his own and keep pace with the new trends, new fashion and new style. And this shows up clearly in the controversy that he had going with Max Born for many years on a rather technical point concerning the subject of lattice dynamics. It was clear that Raman was partly right and he was not totally wrong, but yet the way he made his arguments, people dismissed him, and he was forced to obscurity thereafter. Many people in his generation, of course, suffered an eclipse, but they did not suffer controversy, so one doesn't notice that eclipse. In the case of Raman, unfortunately, the eclipse is very prominent because of the controversy. Although certain aspects of Raman's personality and work have been criticized,
There is no doubt that he was instrumental in laying the foundations of the entire edifice of Indian science. Apart from physics, he was equally interested in the growth of the other fields. These fields were not to be developed in isolation, but in relation to each other. Science was a living, dynamic whole, and ideas needed to be exchanged. So he created a national forum, the Indian Academy of Sciences. He also wanted science to reach the masses. His popular lectures were always comprehensible and tinged with humor. Children were the future of the nation. To them he wanted to gift the joy of discovery. This, then, is the legacy of a man who believed in the potential of the Indian mind. What we lack is perhaps courage, driving force. We need a spirit of victory, a spirit which will recognize that we, as inheritors of a proud civilization, are entitled to a rightful place on this planet. If that indomitable spirit were to arise, nothing can hold us from achieving our rightful destiny. Raman died on November the 21st, 1970, here in Bangalore. He was 82. His death marked the passing of an era in Indian science. A unique memorial marks the spot of his cremation. It is, as he himself would have wished it, this solitary tree. हर वो कदम जो हम आगे बढ़ाते हैं, हर वो इंच जिसे हम नापते हैं, हर वो नक्शा जिसे हम तैयार करते हैं, वो इतिहास और विरासत का खजाना है। एक इतिहास, एक विरासत, एक परंपरा। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और भविष्य के भारत के बीच की कड़ी हैं हम हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत की राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण एजेंसी। हम भारत सरकार के सबसे पुराने वैज्ञानिक विभाग के रूप में पहचाने जाते हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है और राष्ट्र की सबसे बड़ी और प्रमुख मानचित्रण एजेंसी होने के नाते सटीक जियो स्पेशल आंकड़ों और मानचित्र विकसित करने की जिम्मेदारी हमें ही सौंपी जाती है। हम भारतीय रक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नक्शे बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन हमारे द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निरीक्षण करने और लापता हुए या नष्ट किए गए स्तंभों को दोबारा लगाने का काम हमारा होता है। आम लोगों के लिए विकसित की जा रही गतिविधियों में भी मानचित्रों की जरूरत होती है। हम हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए व आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी सभी संसाधनों में अपना पूरा योगदान करें। Survey of India is national mapping agency of our country. We have been carrying out the topographical surveying and mapping for past 253 years to meet the mapping requirement of the country. Survey of India has always used contemporary and state-of-art technology. Survey of India has undergone
almost all stages of developments in the field of map making. We have switched over from the conventional method of point positioning using triangulation, medium traverse, etc. to global navigation satellite system. We are establishing continuously operating reference station network, generally called ports, which can quickly provide precise position of any point. To determine heights very quickly and precisely, we have developed and used geoid model. Use of ports and geoid model will save considerable time and money in surveying. Similarly, for accurate mapping, the old technique of plane tabling has replaced with combination of ortho-rectified imagery and field data collector. Survey of India has taken up certain important large-scale mapping projects and is capturing high-resolution images using drones. भारतीय सर्वेक्षण विभाग लगातार बड़ी संख्या में डेटा विकसित करता है। इसके लिए भौगोलिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। देश की भौगोलिक व्यवस्था में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों यानी बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं से लेकर गंगा के समृद्ध और उपजाऊ मैदान शामिल हैं। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्र, घने जंगल, रेगिस्तान, शक्तिशाली नदियां, दलदल और लंबी तटरेखा भी हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के हिस्से में कई और जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे जियोडेटिक और जियोफिजिकल सर्वेक्षण, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों में भागीदारी, ग्लेशियोलॉजी कार्यक्रम और डिजिटल कार्टोग्राफी और डिजिटल फोटोग्रामेट्री आदि से संबंधित अन्य परियोजनाओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी जरूरतों के लिए बुनियादी डेटा प्रदान करना। मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारत की सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से पहली महिला सर्वेयर हूँ जो कि अंटार्कटिका में गई और वहाँ पे कंटूर मैपिंग का काम मैंने किया। 1:10,000 के स्केल पे हमने अपने कंटूर मैपिंग का काम किया और बहुत ही विषम स्थितियों में, इतने हार्श कंडीशंस में हमने वहाँ पे काम किया है। जबकि समर में गए थे फिर भी टेम्परेचर अप टू -9 तक हमने देखा वहाँ पे, और इतनी टफ कंडीशंस में हमने वहाँ पे अपने काम को अंजाम दिया। ये सब 1757 में प्लासी की लड़ाई में जीत के बाद शुरू हुआ, जब जमीन का काफी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजस्व में थी। राजस्व इकट्ठा करने के लिए उन्हें हासिल किए गए क्षेत्र की जानकारी चाहिए थी और इसके लिए उन्हें मानचित्र की जरूरत थी। नक्शा बनाने के लिए उन्हें उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना पड़ा जो उन्होंने हासिल किए थे। उस समय सर्वे ऑफ बंगाल नाम का एक संगठन अस्तित्व में आया और 1 जनवरी 1767 को कोलकाता में मेजर जेम्स रेनेल को बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। इसी तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सर्वेक्षण के लिए बॉम्बे के सर्वेयर जनरल को 1796 में नियुक्त किया गया और 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेयर जनरल ऑफ मद्रास नियुक्त किया गया। जैसे जैसे सर्वेक्षण का काम और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, इन सभी को 1815 में एक कर दिया गया और उस समय मद्रास के सर्वेयर जनरल कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तब से इस विरासत को संजो कर रखा गया है और एक लंबा सफर तय करके आज ये विरासत 21वीं सदी में पहुंची है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक भारत की नींव विभाग की शुरुआती गतिविधियों के साथ मेल खाती है। मुद्रित मानचित्रों से लेकर डिजिटल संस्करणों तक और फिर ड्रोन की मदद से बनने वाले मानचित्र तक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हमेशा समय के साथ खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय सुरक्षा, संपोषणीय राष्ट्रीय विकास और नवीन सूचना बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
प्रयोक्ता केंद्रित लागत प्रभावी, विश्वसनीय और गुणवत्ता भूस्थानिक डेटा, सूचना और सतर्कता उपलब्ध कराने में नेतृत्व प्रदान करेगा। Earlier, we were producing conventional printed paper maps on various scales. After 2005, we started producing geospatial digital data also. We are now using the latest technologies for generation of high resolution geospatial data. Currently, the source data is being acquired using high resolution satellite imagery, drones and LiDAR. We are carrying out large scale mapping of Abadi areas of village using drones under Swamit scheme of Ministry of Panchayati Raj launched by Honorable Prime Minister. Similarly, work is also being done under other projects in the state of Haryana, Maharashtra and Andhra Pradesh. These projects involve creation of large-scale geospatial digital data on 1:500 or 1:1000 scale for mapping. Recently, the government has released new guidelines for creation, acquisition and use of geospatial data. Under the new guidelines, existing ways of acquiring, sharing and use of data have been greatly simplified and liberalized to help the users. We too are working on the same lines and have simplified our procedures of providing digital geospatial data to the users. भारतीय सर्वेक्षण विभाग सैद्धांतिक प्रगति, पद्धति, संकलन और भूस्थानिक डेटा के अनुप्रयोगों तथा सूचना के सक्रिय आदान प्रदान दृष्टिकोण की प्रगति के लिए डेटा उत्पादकों और प्रयोक्ताओं के बीच में प्रौद्योगिकीय नव प्रवर्तन के लिए समर्पित है। चूंकि आने वाले निकट भविष्य में आने वाले वास्तविक काल में ऐसे अति संभाव्य परिशुद्धता के डेटा को वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। अपनी दूरदर्शिता और लक्ष्य पूरा करने की काबिलियत की बदौलत ही पिछले 250 वर्षों में बहुत ही जुझारू, समर्पित और कड़ी मेहनत करने वाले सर्वेक्षकों की मदद से भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने लगभग पूरे देश को माप लिया है। समय के साथ चलते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने नक्शों के डिजिटलीकरण के लिए पूरा जोर लगाया है। मकसद ये है कि डिजिटल मानचित्र ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकें। High precision leveling and GNSS and GPS survey to provide vertical and horizontal reference point. National Geospatial Reference Frame has been established using rigorous GNSS observations and high precision leveling and gravity observations. Establishment of continuously operated reference stations are also in process to augment the reference framework. राष्ट्रीय स्थानिक संदर्भ फ्रेम पूरे देश के लिए सटीक निर्देशांक और ऊंचाइयों के ढांचे को परिभाषित करने, ज्वार भाटा संबंधी टिप्पणियों और ज्वार के समय का आकलन करने और देश भर में गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण और भूचुंबकीय टिप्पणियों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह के त्रिआयामी मॉडल का विकास करना, जिसे राष्ट्रीय डिजिटल उन्नयन मॉडल कहते हैं। नेशनल टोपोग्राफिक टेम्पलेट का मतलब है सभी पैमानों वाले मानचित्र तैयार करना, वैमानिकी चार्ट बनाना, AAI, नेवी, कोस्ट गार्ड्स के एयरपोर्ट्स, भारतीय वायुसेना के लिए मानचित्र सर्वेक्षण करना, सभी नदियों की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करना, आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए मानचित्र बनाना, जंगलों और छावनियों का मानचित्र बनाना और विशेष उद्देश्यों के लिए अन्य बड़े पैमाने पर मानचित्र बनाना। इसमें आम नागरिक की भलाई और सुविधा के लिए बनी विकास परियोजनाओं का सर्वेक्षण और मानचित्रण भी शामिल हैं। प्रशासनिक सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सीमांकन और पुनर्वास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पट्टी के मानचित्रों की तैयारी, नक्शों पर भारत की सही बाहरी सीमाओं का चित्रण, सही बाहरी सीमाओं की जांच और प्रमाणीकरण, दूसरी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित नक्शों पर भारत की तटरेखा, विदेश मंत्रालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा मामलों पर सलाह देने जैसे काम किए हैं।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा सर्वेक्षण के लिए ऐसा ही काम किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को अंतर्राज्यीय सीमा मामलों पर सलाह देना शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर तक प्रशासनिक सीमाओं के डेटा की तैयारी करना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई 2018 को बनाई गई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय तटों के आसपास खतरे की रेखा का सीमांकन करना शामिल है। एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है टोपोनॉमी। जब भी किसी स्थान का नाम बदलना होता है तो राज्य सरकार इस बारे में केंद्र सरकार को जानकारी देती है और केंद्र सरकार इसकी जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ साझा करती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई नया नाम सुझाए और उसकी वर्तनी पर फैसला ले। ये नियम देश में रेलवे स्टेशनों के नामों पर भी लागू होता है। Regarding specialized survey, every survey work is conducted to meet some specific requirements. That way, every survey work can be taken as a specialized survey. For example, our Directorate of Survey Air and Delhi GDC regularly carries out special surveys to meet the operational requirement of IAF. The Directorate conducts the survey of various airfields of IAF on regular basis and prepares operational and planning general maps, long range navigational chart and landing and approach charts for the use of IAF. भारतीय सर्वेक्षण विभाग देश के सभी तटीय बंदरगाहों के लिए औसत समुद्र तल का निर्धारण करता है। 18.6 वर्षों के लिए समुद्र का स्तर देखा जाता है और गणना की जाती है, जिससे सटीक नतीजे मिलते हैं। ये डेटा समुद्र में उच्च और निम्न ज्वार के कारण अलग अलग आता है। चंद्रमा की पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा परिवर्तनशील होती है, लेकिन हर 18.6 वर्षों के बाद चंद्रमा फिर उसी परिधि में परिक्रमा के लिए लौट आता है। इस प्रकार अवलोकन का समय तय किया जाता है और उसे वैसे ही आंका जाता है। तो अब आप जानते हैं कि मानचित्र बनाने का विज्ञान पृथ्वी के आकार की जानकारी और अन्य खगोलीय पिंडों के साथ इसके संबंध को समझने पर निर्भर करता है। इसके लिए पूरे आकलन के साथ पृथ्वी की सतह पर बिंदु लगाए जाते हैं, जिन्हें निर्देशांक कहते हैं। 18वीं शताब्दी से परंपरा चली आ रही है और आज 21वीं सदी में भी जारी है। इसलिए हमारे पास साझा करने के लिए सफलता की ढेर सारी कहानियां हैं। 250 से अधिक वर्षों की मेहनत का फल है ग्रेट इंडियन आर्क ऑफ मेरिडियन। यह अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजना थी। उस दौर में यह पृथ्वी की सतह का अब तक का सबसे लंबा माप था। ये 1600 मील की दूरी का सबसे सही सर्वेक्षण है, जिसमें लगभग 50 वर्ष लग गए। इसमें उस दौर में हुई लड़ाइयों की तुलना में ज्यादा जानी गई और कंप्यूटर से पहले वाले समय की तुलना में सबसे मुश्किल समीकरण शामिल थे। इस कोशिश की वजह से ही आज हम धरती के सही आकार को जान पाए हैं और इस तरह मानचित्र बनाने का तरीका शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धरती की सबसे ऊंची चोटी की पहचान करने और उसकी गणना करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पहली बार 1847 में देखी गई थी। इसे शुरू में पीक 15 का नाम दिया गया था। 1849 से 1850 के बीच आगे के अवलोकन किए गए और आखिरकार 1 मार्च 1856 को तत्कालीन सर्वेयर जनरल ने इसे माउंट एवरेस्ट का नाम दिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्वतंत्रता के ठीक बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही निर्देशांक की जानकारी मिलने की वजह से नक्शों की सटीक रूपरेखा बन सकी, जिसे हम आज की तरह तरह की परियोजनाओं में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भाखड़ा बांध, भिलाई इस्पात योजना, नागार्जुन सागर परियोजना आदि। और हम भारत में मौजूद ताजमहल जैसे दुनिया के अजूबों को कैसे भूल सकते हैं। ताजमहल की मीनारों के लंबवत होने की जांच हेतु प्रेक्षण सबसे पहले 1957-58 में किए गए थे। इसी तरह
कुतुब मीनार के लंबवत होने की जांच करने के लिए पहले प्रेक्षण 1964 में किए गए थे। ये काम अभी भी नियमित रूप से किए जाते हैं। कई मौजूदा परियोजनाएं वर्तमान और भविष्य को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए रोचक और ऊर्जावान बनाती हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भारत के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों से राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख विकास परियोजनाएं भी मिल रही हैं। इनमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP। इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता मिली हुई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संसाधन के बारे में जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और जल संसाधन प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस परियोजना में केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। Survey of India is executing two main activities under NHP. First activity is creation of the geodatabase of approximately 8 lakh square kilometer, which is about 25% part of the country. Number two activity is generation of the high resolution digital elevation model of half meter accuracy of around 70,000 square kilometer area, which covers mainly rivers of the Uttar Pradesh. In addition to these two main activities, Survey of India is also providing leveling heights to all hydronet stations of the country. Bathymetry depth of water to some of the rivers is also being measured under NHP, which will help to create the database of depth of rivers as well as expected volume of water in case of flood. इस प्रोजेक्ट के अंदर उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, 5 नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन नदियों के 5 किलोमीटर की दूरी तक डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार कर रहे हैं। इस एलिवेशन मॉडल को तैयार करने में हम एरियल बोर्न जो लाइडार सिस्टम है वो ले रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी ले रहे हैं, तथा ड्रोन की मदद से भी हम इसका GIS तैयार कर रहे हैं। इस GIS के बेस पे जो जितनी नदियाँ हैं उनमें बाढ़ कब आती है, कब आएगी, कितना पानी होगा, कितने एरिया उससे अफेक्टेड होंगे, ये सब जानने में बड़ी, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार बाढ़ से काफ़ी तबाही होती है, तो ये सब उनको प्लानिंग करने में काफ़ी मददगार होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस परियोजना के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग 8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र के लिए 1:25,000, 1:10,000 के बड़े पैमाने पर मानचित्रण कर रहा है और साथ ही 50 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन वाला डिजिटल एलिवेशन मॉडल भी विकसित कर रहा है। एक अन्य परियोजना है गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार की एक मुख्य परियोजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण का नियंत्रण तथा नदी के इकोसिस्टम का संरक्षण करना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हेतु गंगा तथा हुगली नदी के दोनों तटों के 10 किलोमीटर क्षेत्र का हाई रेजोल्यूशन DEM तथा GIS डाटा बनाया जा रहा है। यह हाई रेजोल्यूशन DEM तथा GIS डाटा गंगा नदी को स्वच्छ करने में लगे सार्वजनिक, शासकीय तथा गैर सरकारी निकायों को प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा, ताकि उनका गंगा नदी में पहुंचने से पहले समुचित निपटान किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी की मदद से गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण की कोशिश की जाए और इसके लिए जरूरी प्रबंध किए जाएं। इसमें हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल और भौगोलिक सूचना प्रणाली की मदद से डेटाबेस तैयार किया जाना शामिल है। इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भूमिका नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके गंगा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर की सीमा तक आधा मीटर रेजोल्यूशन और GIS के हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM को विकसित करना है। पंचायती राज मंत्रालय की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। इसे देश के सभी गांवों में 1:500 के पैमाने पर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
कुछ अन्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM यानी एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन। कर्नाटक की राज्य सरकारों के लिए ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण, बड़े पैमाने पर हरियाणा राज्य का मानचित्रण, बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण और मध्य प्रदेश का मानचित्रण। राज्य सरकारों की इन परियोजनाओं के लिए मानव रहित हवाई वाहनों की मदद से 5 से 10 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन के अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डेटा को इकट्ठा करने की जरूरत होती है। रेलवे पटरियों के आसपास 3D मैपिंग करने को लेकर भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक पोर्टल है मानचित्र, जहां ओपन सीरीज मैप्स को आम जनता द्वारा डाउनलोड करने के लिए PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है। indiamaps.gov.in पर मानचित्र वेक्टर फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिनमें रास्तों की जानकारी मिलती है और जरूरी जगहों पर पहुंचने के लिए दिशा निर्देश मिल जाते हैं। केंद्र और राज्य के सरकारी विभागों के लिए सरकारी पोर्टल हैं, जहां सरकारी एजेंसियां भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाए गए जियो स्पेशल डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। मोबाइल ऐप सहयोग को भारत के सरकारी विभागों और छात्रों व आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से आप मोबाइल फोन पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर अपनी रुचि के बिंदुओं को रेखांकित कर सकते हैं। Geodetic surveys are the surveys in which curvature of Earth's surface is also taken into account. Geodetic survey is usually conducted to survey a large land area. The degree of accuracy aimed in the geodetic surveying is very high. The main objective of geodetic survey is to determine the precise position of the distant points on the surface of Earth. In Survey of India, Geodetic and Research Branch, Dehradun, is responsible for precise measurements and looks after all the geodetic surveying needs of the country. भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जियोइड मॉडल का विकास करना भी शुरू कर दिया है। इससे लोगों को औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाइयां आसानी से पता चल पाएगी और इसके लिए GPS उपकरणों का इस्तेमाल होगा। जियोइड मॉडल का बीटा वर्जन पूरे देश के लिए विकसित किया गया है और जारी किया जा चुका है। फिलहाल हायर रेजोल्यूशन मॉडल को विकसित किया जा रहा है। पूरे देश के भौगोलिक डेटाबेस को बनाए रखने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग हाई रेजोल्यूशन भौगोलिक डेटाबेस को 1:10,000 के पैमाने पर तैयार कर रहा है। इसके साथ ही ऑर्थ रेक्टिफाइड तस्वीरों को 1:500/1:1000 के पैमाने पर 10 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही ऑर्थ रेक्टिफाइड तस्वीरों को 1:500/1:1000 के पैमाने पर 10 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ तैयार किया जाएगा और अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM को 20 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ तैयार किया जाएगा। ये काम मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV की मदद से किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग इतनी सटीकता के साथ ऐसी जटिल गतिविधियों को कैसे पूरा कर लेता है। ये अपने आप में सराहनीय है और ये काम टीम वर्क से होता है। हम देश के चप्पे चप्पे को मापते हैं। हमारी विशेषज्ञता है पैमाने, लंबाई, आकार, क्षेत्र और कोण को मापना। हमारे कंधों पर भारत के मानचित्रण की जिम्मेदारी है और इसके लिए जबरदस्त क्षमताओं और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। राष्ट्रीय भू सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान NIGST हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के अलावा अन्य सरकारी एवं निजी संस्थानों के कर्मचारियों को सर्वेइंग एवं मैपिंग में प्रशिक्षण देती है। यह संस्थान एशिया के अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ओमान, अफगानिस्तान तथा कुछ अफ्रीकन देशों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है।
NIGST के प्रशिक्षण की यह विशिष्टता है कि इसमें थियरिटिकल ज्ञान के साथ साथ संबंधित व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग एवं कार्टोग्राफी के मूल क्षेत्रों के अलावा यहाँ JS, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग एवं जियोडेसी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2021 में घोषित की गई नई जियोस्पेशियल नीति के अनुसार कोई भी भारतीय जियोस्पेशियल कंपनी सर्वेइंग एवं मैपिंग का कार्य कर सकती है। अतः भविष्य में जियोस्पेशियल क्षेत्र में कुशल कार्मिक शक्ति की काफ़ी आवश्यकता होगी और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए NIGST के पुनर्गठन की प्रक्रिया की जा रही है। नवीनतम जियोस्पेशियल तकनीकी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रचना एवं आयोजन हेतु NIGST, IIT कानपुर एवं IIIT हैदराबाद जैसे कुछ प्रमुख तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। देश में जियोस्पेशियल क्षेत्र में बढ़ती हुई कुशल श्रम शक्ति की मांगों को ध्यान में रखते हुए NIGST संबंधित कौशल विकास हेतु औद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की दिशा में काम कर रही है। पुराने समय में सर्वेक्षण के लिए जो उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते थे वो हमारे संग्रहालय में रखे गए हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। संग्रहालय में कुछ चार्ट और पोस्टर भी हैं जो सर्वेक्षण की मौजूदा गतिविधियों के बारे में बताते हैं। इस संग्रहालय में विभागीय पुस्तकालय भी है जिसमें पुरानी किताबें, दस्तावेज और प्रकाशित सामग्री भी है। यहाँ आने वाले लोग सर्वेक्षण तकनीक के विकास की यात्रा को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और पुराने उपकरणों और तकनीक की तुलना नए उपकरणों और नई तकनीक से करते हैं। इस तरह भारत के मानचित्रण में अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था उसे भारतीय अवधारणाओं में बदल दिया गया है। आज के आधुनिक तकनीक वाले दौर में हम अतीत की विरासत को भी जानते हैं और हमारे पास भविष्य का ब्लूप्रिंट भी है। भारत की पवित्र धरती हमारी कर्म भूमि है, इसलिए हमसे हाथ मिलाइए और अपने भारत को जानिए।